गुड इवनिंग जी। तारीख है 29 अगस्त, महीने का आखिरी सेशन। आज महीने का आखिरी सेशन था और मार्केट हो गया क्लोज। तो देखते हैं कि आज वीकली कैंडल के अलावा मंथली कैंडल अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक मंथ क्लोज हुआ है तो ऐसे में किस टाइप से परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। तो आज हम डेली के टाइम से आधे घंटे पहले हैं। रेगुलर सेशन हमारे 10:30 पे होते हैं। आज से हमने अपने सेशन का टाइमिंग चेंज किया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 बजे ही सेशन करें, क्योंकि 10:30 थोड़ा सा लेट हो जाता है। ठीक है जी, चलिए जी फटाफट। ये यूएस मार्केट कुछ स्टॉक्स हमने खोल रखे हैं। अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले भैया पहले चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जनरली रिक्वेस्ट करता नहीं हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा है। लेकिन शायद थोड़ा सा लाइक शेयर करेंगे तो मोटिवेशन बना रहता है, जस्ट और कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो एनवीडिया एक ऐसा स्टॉक है जो कि यूएस के स्टॉक्स हैं। टेस्ला देखिए, टेस्ला कैसा है। अपने मार्केट पे भी आएंगे भाई, अब जो खुला है पहले उसको तो देख लें। टेस्ला ने यहाँ डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। फिर इस छोटे से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया था, वापस से रिटेस्ट किया, लेकिन अभी भी एक छोटे से कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। एमएसीटी बार बार अपने सिग्नल लाइन में क्रॉस कर दे रहा है, तो कुछ नहीं। ये क्या है, एसेंचर। ये क्या था, टेस्ला। टेस्ला एसेंचर आईटी सेक्टर। ओके, टेस्ला का चार्ट भी देखें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन वीकनेस नहीं है। ठीक है चार्ट, और ठीक है। देन दिस इज अडोबी का चार्ट है। मोटा मोटा सारा स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि सारे स्टॉक्स में मोमेंटम जा रहा है। ठीक है, और ये बता रहा है कि अभी कुछ दिन कंसोलिडेशन मोड में आ रहे हैं सारे चार्ट्स। देखिए डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, क्रूड बढ़ रहा है, तो ट्रेजरीज में हाइक है, तो उसके सब के चलते मैक्रोज कुछ ऐसे बने हुए हैं कि सारी इक्विटी जो है वो कंसोलिडेशन फेज में चली गई, और अच्छे रनअप के लिए ज़रूरी भी है। अमेजोन, ये क्या है, एनवीडिया। एनवीडिया देखो कितना शानदार, हमारे सिस्टम के हिसाब से पकड़ते तो आप कहीं यहाँ पे एंट्री करते। ठीक है, और यहाँ से आपको कितना बड़ा रनअप मिलता, एटलीस्ट यहाँ तक, और यहाँ कहीं आप निकलते। कोई बात नहीं, निकल जाते ना, तो उसके बाद कितना ही गया, ऊपर आके फिर से नीचे आ गया, डबल टॉप टाइप की स्थिति बना रहा है। इसके नीचे जाएगा तो ब्रेक डाउन हो, वैसे बाउंस कर रहा है, कोई डाउट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपनी पोर्टफोलियो पे जाएंगे, सेक्टर्स को एनालाइज करेंगे, और आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी कल के सेशन में अगर हुआ तो हम NSE 500 के स्टॉक्स एनालाइज करेंगे कल और परसों, और जो बेस्ट स्ट्रक्चर्स होंगे नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि संभावना है मार्केट ने एक रिवर्स किया है, और कल का जो सपोर्ट था, रेजिस्टेंस तोड़ के वीक ब्रेकआउट हो सकता है एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया हो मार्केट में। ठीक है, एप्पल वीक के चार्ट, मेटा का चार्ट देखिए, मेटा जबरदस्त भागा। मेटा अगर हम खरीदते तो मेटा कहाँ खरीदते, तकरीबन यहाँ पे खरीदते तो मेटा बढ़िया, यहाँ कहीं एग्जिट कर दिए होते, फर्स्ट क्लास। अब खरीदेंगे तो प्रीवियस स्विंग हाई 311 के ऊपर। गोल्डमैन सैक कंसोलिडेट कर रहा है इन ट्रायंगुलर फैशन। देन बैंक ऑफ, बोलो। हाँ जी,
चलिए बैक टू वर्क। बैंक ऑफ अमेरिका की चार्ट देखिए तो डाउनवर्ड स्लोपिंग चल रहा है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जाने क्यों मार्केट में लोग पैसा लूज करते हैं भाई, देख रहा है ना। अगर आप अपने कैश मार्केट के पोर्टफोलियो को स्टार्ट करें और उसी पे इतनी चार्ट्स पे इतनी प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको लॉस कभी होना ही नहीं है। कितना अच्छा डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल फॉलो कर रहा है, देख रहे हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस, कुछ नहीं होना है इसके, बार बार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, यहाँ तक आ सकता है। इसको तोड़ेगा तो बहुत भारी समस्या हो जाएगी इसको, ठीक है, और तोड़ सकता है। आप ये देखिए एमएससीटी सिग्नल लाइन से कितना जबरदस्त रिजेक्शन ले रहा है, तो होने में कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। देन इज गूगल, गूगल का स्ट्रक्चर ठीक है, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेट में है, लेकिन एमएससीटी ने यहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल लाइन को क्रॉस कर दिया है, तो मोमेंटम वीक हो रहा है स्लोली स्लोली। कोका कोला, कोका इज ओके, बर्कशायर हाथवे, इट इज आल्सो ओके, नथिंग टू वरी। मोर और लेस सभी स्ट्रक्चर्स पे हो रहा है कि 200 एक्सपोनेंशियल वीकली चार्ट में मोमेंटम थोड़ा सा वीक हुआ है। इसका मतलब संभावना है कि एक महीना 15 दिन एक महीना थोड़ा सा मोमेंट ज़्यादा एक चल रहा है वन साइडेड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले चलते हैं अपनी पोर्टफोलियो की तरफ। अगर निफ्टी की पोजीशन देखें तो निफ्टी इस वीक में क्या कैसा था, निफ्टी इस वीक में -0.18% डाउन था। इसका मतलब मोटा मोटा उसने कंसोलिडेट किया, कुछ भी नहीं किया इस वीक में। और मंथली कैंडल अगर देखें तो मंथली कैंडल में निफ्टी जो लास्ट वीक ब्रेकआउट हुआ था उस ब्रेकआउट को सस्टेन किया, देख रहे हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर आप मंथली कैंडल देखें तो आरएसआई ने सिग्नल लाइन पर सपोर्ट लिया और परफॉर्मेंस किया, और एमएससीटी ने भी क्रॉसओवर दे दिया है। तो मंथली चार्ट बिल्कुल इंटैक्ट है, कुछ भी समस्या नहीं है। वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा वीकनेस है। ओहो, अगर आप ये देखें तो डेली चार्ट में निफ्टी पहले आज का हाई कितना था, ओह स्लिप किया है अपने हाई से। हाई वाज 19,652 53, थोड़ा सा नीचे आया है डे हाई से, कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी डेरिवेटिव का चार्ट देखें तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा कि मार्केट वापस से अपने जो ब्रेकडाउन लेवल था उसको रिटेस्ट किया। अब क्या करना है, ब्रेकडाउन लेवल था ये 19,653, हमने कल बात की थी कि मार्केट जैसे इसने इसको ब्रेक किया था तो नीचे आ गया, वापस से पुल बैक आया, पुल बैक आके अब अगर यहाँ से नीचे एक बार मार्केट स्लिप किया तो लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर में वो मूव करने लगेगा, ठीक है। तो मार्केट की स्ट्रेंथ वीकनेस अभी आपको पता नहीं चल रही, एग्जैक्टली ऊपर जाके उसने रेजिस्टेंस पे आकर रुक गया है, ठीक है। तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा उसके बाद ही उस डायरेक्शन उससे क्लियर होगा। 75 मिनट चार्ट से देखें तो नीचे एक सपोर्ट जैसा दिख रहा है। प्रणिका बेबी, कैन यू प्लीज ब्रिंग दिस चार्जर, लैपी चार्जर, थोड़ा होल्ड करिएगा प्लीज 2 मिनट। Yes, back to the business. Now, if you look at the weekly chart, if you look at this 75-minute chart, you'll find the MACD structure is moving upward.
and it is continuously showing the buying signal. Means what? It is gaining momentum on the 35-minute chart, and price is also making higher high structure. ठीक है? And trading above its significant moving averages. Means what? This chart is bullish. It means the propensity, the probability of this chart moving upward is high, और ये short term bottom हो सकता है. If you look at the RSI, you find on the daily chart, it has taken support multiple times on its RSI 40 level, and there is high probability that it may bounce from here and may move upward. तो ये क्या हो जाएगा? हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में निफ्टी चलेगा, लेकिन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ओनली कैन टेल व्हाट इज इन द मार्केट किस टाइप से बिहेव करेगा. ठीक है, अब अपने स्ट्रक्चर्स में इफ यू टॉक अबाउट द प्रेजेंट होल्डिंग this Tanla platform, we have already marked the labels. Unless and until it crossed its previous swing high of this 1011 around, we have marked an alert also 1078. Unless and until it crosses this one, we will not make add a fresh position. ठीक है, chart is bullish, but there is no point in adding this when the market is weak. Suppose the market had been in the good condition, then you would have made कुछ contributions यहाँ पे, कुछ first tranche of money you could have deployed here. But considering the market scenario, when the trend of the market, short-term trend of the market is not yet clear, it is not advisable to put any money in the market, to add any fresh money in the market. Whatever the position you have in the market, please hold it and review it on daily basis. And once it hits its stop loss, get out of that stock without any second thought. Then is Polymedicure. It's still intact, it's still holding its super trend on the daily chart. We're not touching it. And it is in the consolidation zone. See, the upper level is this one, 1489, and the lower level is 1348. तो एक छोटे से रेंज में consolidate कर रहा है, but it is intact. Tech Mahindra, this one stock which has given a sharp pullback, but is still holding its breakout level. ठीक है, तो since the stock has not run up a lot from its consolidation zone, it has just come out of its consolidation zone and is making pullback. So that's what we have not, अपना पैसा हमने इसमें से निकाला नहीं है, and we are still hopeful with this structure. And of course Tech Mahindra is not a company which you can sell, entry exit नहीं कर सकते. कि अगर मान लीजिए यहाँ से तोड़ के 200 exponential moving average पे भी आता है, then only I will not have problem, because this is one such stock which will ultimately go up, that's for sure. ठीक है, then RSL Geartech, I have already exited this stock. I'm holding just the profit money. Whatever profit I have earned in this stock has actually got doubled from my buying level. My buying level is this 600 round, and I exited somewhere here at 1200. Means almost double. So 50% of the money, that is the original money that I invested in this stock, I have taken out, and the rest 100% money that I have doubled in RSL getting, that is only with this stock at the moment. And I have this conviction that once the stock has got doubled, you should keep that 50% of money profit with this stock and let that go and let it make your investment portfolio. ठीक है? Then BSE is still eagerly holding for this BSE to cross its previous swing high, or at least become it, let it become a super trend, become positive. एक बार प्रीवियस स्विंग हाई, अगर आप वीकली चार्ट को देखें तो इसने ब्रेकआउट दिया है, शानदार बुलिश, उसका फॉलो अप मूव किया है, लेकिन in the last 2 weeks, or you can say in the last 3 weeks, this stock is consolidating. Very much required for any high momentum stocks to consolidate. But in this consolidation zone, in this pullback, we had exited this stock almost 30% of the quantity and holding a very small quantity, 20%.
but do we have exited this stock permanently and it has gone out of sight? No, we are holding for this stock too. And once its structures develops, I'm actually waiting for this. It was sure for me that this stock will bounce back when its RSI will bounce from its 40 level, 60 level. But I did not increase my allocation in this stock because its MACD is not supporting this view. And I will not put any extra money unless and until its RSI on the daily chart doesn't become a buy. I'm waiting for this one to become positive and let it cross its support and become positive. We'll increase our portfolio, we'll increase our allocation in this stock. And this time, probably this is the only stock in my portfolio that has given more than 40% of the return that I have accrued for the last 2-3 years since the COVID run up. So this stock has given a tremendous run up in my portfolio. Then Electra Green. If you look at the chart of this Electra Green, you'll find this stock is giving a rounding top pattern here. And suppose this pattern gets materialized, it has also given a sell signal. RSI on the weekly chart, this MACD on the weekly chart. So I have exited this stock completely. I have kept it that I have already mentioned in my previous videos also that I have exited this stock, and if you want to know the exact date when I have exited, somewhere here. Okay, I have exited this stock. But I will make fresh entry only when it crossed its previous swing high of 1250. Once it crosses 1250 and its super trend means all its parameter indicates and give a clear signal that it is going to make a run up, then only we can consider making fresh entry in the system. Okay? Then is this Sona BLW. It's a microcap stock and it is moving in a higher low structure. If you follow its chart on the weekly time frame, and being microcap stock, it pullbacks in such type of stocks very deep. It also moves in a jerky fashion. इसमें रन अप भी एकदम जर्क्स में आएगा और पुल बैक्स भी शार्प होंगे, तो यू हैव टू कीप योर गट स्ट्रांग to bear the shocks. Okay. The ultimate target with this stock is this. Its previous swing high of 789. Still a lot of potential left with this stock. Should sit tight with this one. Then Wipro. Wipro has again retested its breakout level. And nothing to say, idea is not performing. You should keep it strong in your portfolio. Zomato. Very good. Very good chart structure. It is moving in higher low structure. And if you look at its daily chart, it is also making a rounding small bottom type of structure, and it is poised to move upward. I'm just waiting to increase my allocation in Zomato only when its super trend, its MACD basically in the daily chart becomes a buy and it supports a move. Then only I will allocate this. But this structure is very much positive. And if you clearly want to mark this one, I will mark its previous swing high. Let it cross its previous swing high. I'll make a fresh entry into this stock. Then CDSL, very good structure. If you look at the weekly chart, it is making a high breakout level there or daily chart mein there. If you look at the daily chart, a small head and shoulder type of a structure. This is one shoulder, this is head, and this is another shoulder, and it's breaking out of its this, and it's all MACD, its RSI, all are well poised. And I have firm conviction that this stock is in my portfolio is the one which will surely outperform all the stock in the coming week. This is the main hero for the coming week, CDSL, and that's why I have increased my allocation in this stock in this week. Then I have added this PSU Bank ETF because if you look at this,
you'll find it has broken out of its consolidation zone and is moving higher. Look at the volume build up here. It is very strong chart setup. Okay, and it should be with this stock. इसलिए हमने क्या PSU banks में pullbacks बहुत sharp आते हैं. That's why I opted to go for the PSU bank ETF. PSU bank 20. ठीक है, तो let's hope क्या होता है. And FSL, very good structure. This is another stock which has huge potential. Tata Motors, wow, my hero. ये अभी चलना बाकी है. चलिए, तो मोटा मोटा हमने क्या किया कि सारे स्टॉक्स को एनालाइज कर दिया. एक बार क्या करते हैं कि स्मॉल कैप माइक्रो कैप को भी देख लेते हैं कि किस टाइप से स्ट्रक्चर में है. माइक्रो कैप फ्यूचर्स, unless and until it crossed its previous swing high of 9203, देखिए भी मत, कंसोलिडेशन जोन में चले गए हैं ये. देन स्मॉल कैप में एक बाउंस बैक आ रहा है एंड there is a high probability that the small cap may outperform this mid cap. ठीक है, और स्मॉल कैप अपने प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस कर दें और हायर अप्स में मूव करें. लेकिन considering the rally that we have witnessed in the small cap since this March 23, it is advisable, it is actually at most required for these small caps to cool a bit for a month or two and to take a breather and then start afresh, because this type of movement is not actually good for any stock. NSE 500, and this one is microcap. Some में strength है. We'll see how it performs, how it pans out at the next week. Yes, Nifty PSCs, PSU banks. More or less, these are all the sectors. These are all the sectoral charts. If you see, almost all are in doldrums. Only PSU stocks, then Nifty PSU and Nifty PSU Bank. Only these two are the sectors which are likely to outperform the market in the coming week. And pharma, yes. Pharma is not in a sustainable run up, but yes, if you look at this RSI, it has given a pullback in this week. And but this pull, don't be get confused with this pullback. It is highly bullish on the weekly chart and on the daily chart also, on the monthly chart also. So there is a probability that this dollar will move upward. There's no doubt about it. ठीक है, तो मोटा मोटा हमने अपना व्यू शेयर कर दिया है निफ्टी, बैंक निफ्टी, अदर इंडाइसेस पे, और अपनी पोजीशंस को भी डिस्कस किया है कि जो नई पोजीशंस ऐड करी उसके बारे में बताया, जिसमें पोजीशंस को हल्का किया है उनको बताया है. ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसा रहा है. कल NSE 500 के स्टॉक्स का थोड़ा रिव्यू करेंगे and we'll come out with the stocks which are in good shape, good structure, and which are breaking out or breaking down, so as to plan our trades in the coming week. ठीक है, see you tomorrow at 10 o'clock in the evening. अब 10:30 मिनट 10 o'clock पे करेंगे वीडियो. ठीक है, मिलते हैं.